जी दोस्तों, आज जो है ना कैपाडोसिया में जो सेकंड दिन का जो आगाज़ है वो हो चुका है। ड्राइवर ने मुझे पिक कर लिया। तो आज जो हमारा प्लान है वो है कैपाडोसिया का करीन एरिया बाय हैकिंग। हम पैदल चल के जो है ना वो पूरा एरिया जो है वो कवर करेंगे। वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है। उसके अंदर जो है ना इधर की जितनी भी हिस्ट्रिकल प्लेसेस है, स्कूल हो गए, म्यूज़ियम्स हो गए या हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं जितने भी, और पॉइंट है, व्यू पॉइंट है और जो है अट्रैक्शन वाले पॉइंट है, वो सारे जो है ना हम जो पैदल जो है ना कवर करने वाले हैं। तो ये जो प्लान है ये मैंने ग्रुप प्लान लिया है, ठीक है। हम एक ग्रुप होंगे, ग्रुप के थ्रू जो है ना हम ये चलेंगे। ये मैंने एक ट्रैवल एजेंसी से लिया, ठीक है। इधर का लोकल ट्रैवल एजेंसी था, उससे मैंने ये हायर किया। तो जो है ना आज का दिन जो है ना बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो अमेजिंग अगर मुझे इसका जो है ना मैंने फेसबुक में और जो है ना इंस्टाग्राम में मैंने इसका जो है ना हिस्ट्री पढ़ी थी। तो ये जो इसके जो रिव्यू थे ना इस ट्रैवल एजेंसी के और इस हाइकिंग टूर के बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अंदर ये फुल डे का टूर है, तकरीबन 12 से 14 घंटे का ये टूर हो जाएगा। इसके अंदर ये लोग लंच भी देंगे हमको, ठीक है। और ये बोल रहे थे कि जो इस टूर में आना चाहते हैं वो लोग जो है ना फिट होने चाहिए, मतलब उनको कुछ भी चलने में प्रॉब्लम ना हो, लेडीज़ वगैरह है तो वो प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है, या पाँव वगैरह में कुछ प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से जो लोग फिट लोग हैं वही जो है ना इस टूर को बुक करें। और जो मज़े की बात ये है कि वो साथ में उन्होंने लिखा वो अपना टॉवल लेके आए, साथ में जो है ना शूज़ जो कंफर्टेबल हो, जो आपको चलने के लिए कुछ दिक्कत ना दें। तो लेट्स ही चलते हैं। ये अभी जो मुझे पिक करने वाला ड्राइवर है ये मुझे लेके जाएगा उधर जिस जगह पे दूसरा ग्रुप जो है वो हमारा वेट कर रहा होगा। जैसे पूरे लोग जो एक ग्रुप के लोग इकट्ठे हो जाएंगे फिर वो ग्रुप जो है ना निकलेगा। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं, उधर जाके जो है ना फिर देखते हैं। तो मैंने अभी ड्राइवर से पूछा कि आप मुझे किधर लेके जा रहे हो, मसलन इधर से हम किधर जाएंगे। तो वो बोल रहा है कि हम जो है ना इधर से गोरे में जाएंगे। गोरे में जो है ना दूसरे ग्रुप के जो मेंबर हैं वो उधर वो भी होंगे। तो हम जो है क्या करते हैं कि इधर से अलग अलग जो होटल से है ना पिक करते हैं। इनका काम यही है, ये जस्ट पिक करते हैं। पिक करने के बाद एक जगह पे इकट्ठे कर लेते हैं। फिर एक जगह में इकट्ठे करने के बाद फिर वहाँ से जो है ना ग्रुप निकलते हैं टूर के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना गोरे में ये भी एक विलेज है इधर, ठीक है, कैपाडोसिया का। इधर भी होटल बहुत ज़बरदस्त है, रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। गोरे में का अपना जो है बस टर्मिनल है, जैसे उर्गब का अपना बस टर्मिनल था। मेरा होटल जो था वो उर्गब में है। उर्गब से गोरेमे का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 7 to 8 किलोमीटर है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए तो तकरीबन 20 लीरा वो लेती है। तो खैर मैं तो पब्लिक ये इधर का लोकल मसलन टैक्सी है, जो यही लोग क्या करते हैं मुख्तलिफ होटलों से लोगों को इकट्ठे करके एक जगह पे ले जाते हैं। फिर वहाँ से जो है ना ग्रुप निकलते हैं, जो ग्रुप जिस चीज़ का होता है उस तरफ ले चलते हैं। तो अभी हम जो है ना गोरेमे में जा रहे हैं। गोरेमे में तकरीबन आई थिंक हम पहुँच चुके हैं। और रोड्स बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, ठीक है, बेहतरीन
रोड है यहाँ पे, वो सामने जो है ना हमारे वो गोरे में गाँव है, ठीक है, विलेज, तो उधर हम जा रहे हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी रात को चेक किया कि मुझे जो है ना रेंट पे इधर बाइक मिल जाए, स्कूटर मिल जाए, लेकिन उर्गम में कोई भी रेंट कार तो बहुत थे, लेकिन जो है ना उर्गम के अंदर तो बाइक रेंट के लिए सिस्टम नहीं था, तो बाइक तो मैं नहीं ले सका। और वैसे भी जो है आज जो है मेरा इधर जो है ना ये लास्ट दिन है, कल जो है मेरा मैंने सफ़र करना है अनातालिया का, तो कल मैंने अंतालिया जाना है। तो अंतालिया जाने के लिए जो मुझे बस मैंने बुक की हुई है वो मेट्रो की बस है, और मैंने बुक की हुई है इधर से गोरे में बस टर्मिनल से। तो कल मैं लोकल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जो है ना इधर गोरे में मैं आऊँगा बस टर्मिनल पे। बहुत सारे विजिटर हैं इधर, आप देख सक रहे हैं, जीप सफारीज भी हैं, और नीचे प्लेस भी बहुत अट्रैक्शन वाली प्लेस है, बहुत ज़बरदस्त ये प्लेस है। आई थिंक ये हम इधर से जो है ना अपना ये है गोरे में ओपन एयर म्यूज़ियम है नीचे, और यह मुझे लग रहा है कि हम इधर से जो है ना अपना जो है ना टूर का आगाज़ करेंगे। तो नीचे जाके देखते हैं कि जो हम किधर से करते हैं और क्या प्लान है। लेकिन ये जो मेरे सामने है ये म्यूज़ियम है, अभी ये गोरे में है ओपन एयर म्यूज़ियम। तो इधर ही मेरे ख्याल से इन्होंने जो है ना ये एक पॉइंट बनाया होगा कि जिधर सब लोग जो है इकट्ठे होते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं जाके हम। ये ऊपर से जो है ना बड़ी बसें हैं, वो भी इधर से आ रही, बहुत डेंजर वे है, लेकिन फिर भी जो है ना अच्छा, लोग इधर भी जो है ना बहुत ज़िद्दी हैं। वो बस वाला बस खड़ी करके जो है ना वो नीचे आ गया, वो बोलता ओके मैं नहीं जाएगा, तुम अपनी जीप पहले पीछे करो फिर मैं जो है ना आगे करूँगा। ये सामने हमारे पास जो है ना गोरे में एयर म्यूज़ियम है, देखें, इधर भी हम जो है ना आएंगे, हमारे प्लान में का ये भी हिस्सा है। ये इधर की पार्किंग, कार पार्किंग। देखिए वो इतने छोटे रास्ते हैं, बसों के लिए जगह नहीं है, फिर भी जो है ना बसें इधर घुसा देते हैं। ये लोगों को थोड़े जो है ना सेंस होनी चाहिए। ये ऐसे लोग हर कंट्री में पाए जाते हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा जो है ना कम होता है। मेरे ख्याल से ओके, जो रास्ता है ठीक है, उधर बस जाना चाहिए, इधर नहीं है, उधर भी बस घुसा देना ये अच्छा नहीं है। इतना आदमी को सेंस होना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल मंजर है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। और जो है ना मेरा तो अभी जो है ना ऐसे फील हो रहा है कि आज का दिन जो है ना बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही। ये सामने 4 व्हील जो है ना बाइक्स रेंट के लिए हैं। इनका कल मैंने पूछा था क्या रेंट है, तो ये 40 यूरो जो है ना पर डे का रेंट लेते हैं, और ये पेट्रोल पे चलती है। और जो स्कूटर है वो 30 यूरो है पर डे का रेंट। तो मेरे ख्याल से जो है ना आदमी इधर आए ना, तो लोकल ट्रांसपोर्ट से मेरे ख्याल से अच्छा है कि आप ये रेंट में ले लो एक दिन के लिए,
जो है ना आप एक दिन में पूरा कवर कर सकते हैं। तो मुझे पहले इसका नॉलेज नहीं था, अगर मुझे नॉलेज होता तो मैंने यही करना था पहले। ये देखें जगह जगह पे जो है ना ये रेंट के लिए बाइक्स खड़ी हैं। घोड़े भी इधर रेंट पे मिलते हैं। मेरे पीछे ये इस्तेमाल है, मैं आपको दिखाता हूँ। घोड़े भी इधर से जो है ना आप रेंट पे ले सकते हो। अच्छा, मैंने एक चीज़ इधर देखी है, मैं जब आ रहा था तो इधर जो है ना जो चौक होते हैं ना उधर मैंने देखे हैं कि डिमी खड़ी किए हुए हैं घोड़ों की बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है यहाँ के कुछ घोड़े वगैरह फेमस है। मेरे सामने वो घोड़ों का जो देखें तो मतलब उधर से घोड़े जो है ना आपको रेंट पे मिल जाएंगे। तो अगर आप आए तो आप घोड़े की राइड करना चाहें तो आप ले सकते हैं वो भी, ठीक है। जो ये सारे मेरी राइट साइड पे देखें जो है ना काफ़ी जो है ना ये घोड़ों के जो है ना रेंट के लिए काफ़ी प्लेसेस हैं। तो आप जो है ना इधर से कोई भी जगह से ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे जो है ना बाइक्स वगैरह रेंट पे ले सकते हैं। बाइक्स जो है ना वो सबसे अच्छी ऑप्शन है। बाइक इसलिए सबसे अच्छी ऑप्शन है कि एक तो 4 व्हील बाइक है, सेफ है और हैवी बाइक है, अच्छी पावर वाली। आप किधर भी जो है ना आप उसको लेके जा सकते हैं। अभी हम जो है ना ये गोरे में कैंपिंग पार्क है, ये उधर से हम जो है ना अभी अंदर की तरफ निकले हैं। मुझे लगता है कि जिधर से हमने जो ट्रिप स्टार्ट करना, मैं समझा था शायद म्यूज़ियम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहीं, ये हमको उधर से किसी और जगह लेके जाए। मुझे लगता है वहीं लेके जा रहा है जिधर से ये ट्रिप स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कि हमको ये किधर लेके जाता है। बोला तो यही है कि ये गोरे में लेके जा रहा है। अभी हम है तो गोरे में, लेकिन ये किस जगह में लेके जा रहा है ये भी कंफर्म नहीं है। ये उधर जाकर देखते हैं। कैंपिंग एरिया भी है इधर, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त मंजर है, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है इधर, व्यू बहुत अच्छे हैं। इधर जो है ना देख रहे मेरे राइट और लेफ्ट दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में मेरे इधर घोड़ों जो है वो रेंट के लिए है और राइट साइड में बाइक्स वगैरह है, उनका जो है ना बाइक रेंट पे लेने के लिए आप इधर आ सकते हैं। अगर आप इधर डायरेक्ट आएंगे तो आपको और भी चीप मिल जाएगी। मेरे ख्याल से आपको 25 यूरो में मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन बुक करेंगे तो वो थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी। इधर में हमें एक और जो है ना होटल में आया है। मुझे लगता है इधर से भी इसने जो है ना कुछ गेस्ट जो है वो ग्रुप मेंबर जो है वो रिसीव करने हैं। तो वो मेरे ख्याल से इधर से वो ना फ़ोन कर रहा है। तो अभी मुझे लग रहा है मैं फ़र्स्ट इनका ग्रुप मेंबर था जो इन्होंने मुझे पिक किया इधर से। अभी ये और मज़ीद जो है ना पिक करेंगे। पिक करने के बाद ये जो है ना हमको एक जगह पे जो एक इनका जो है प्लेस होगी जिधर इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया है उधर लेके जाएंगे। उधर से जो है ना फिर हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा। तो ये अभी हम सेकंड पे आया। इधर में 2 लोग हैं, 2 लोग हैं और ये यूरोपियन लग रहे हैं। ये हमारे मेंबर हैं। नहीं, 2 और है, 2 कपल। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो 4 लोग इधर से जो है ना और जो है ना रिसीव किए हैं। तो अभी इधर से हम निकल पड़े। अभी मेरे ख्याल से अभी और गेस्ट ये लेंगे या मालूम नहीं, देखते हैं वो भी हम। अभी जो मैं गोरे में के जो है ना विलेज के में सेंटर में आ गए हैं। ये यहाँ का सेंटर है। लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो है होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत अच्छा व्यू है। गोरे में भी अच्छी प्लेस है, ये भी अच्छा विलेज है। मेरे ख्याल से जो है ना मैं पहले देखा नहीं था गोरे में का। अगर मैं पहले देखता तो मैं गोरे में जो है ना होटल बुक करता, लेकिन खैर वो भी अच्छा है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये इसलिए कि मोस्टली जो है ना टूरिस्ट कंपनियां और अट्रैक्शन प्लेसेस जो है ना वो इधर ही हैं और इधर से जो है ना लोग जा रहे हैं।
इसलिए जो है ना मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों का प्लान हो तो आप कोशिश करो कि आप जो है ना गोरेमे में ही जो है ना होटल बुक करो। जो ये है हमारे टूर गाइडेड जो हमारे साथ आ चुके हैं। गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, अभी हम जो है ना इधर से निकले हैं। हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं वो ऑलरेडी जो है ना हमारी बस में बैठ चुके हैं। मैं आप लोगों को सब So when you got the picture, I was taking you seriously. Bus, the plate numbers are 262. 262. There will be dozens of minibuses like this, so keep this in mind. 262. 262. Before we start, let's meet each other. What's your name? Where are you from? What's your name? Frank from Australia. Frank. Nice to meet you, Frank. Joe from Australia, the other half. Better half. Yeah, better out. Thank you. Nice to meet you. इरफान फ्रॉम पाकिस्तान। Irfan, welcome, Irfan. Andrew from Germany. Andrew from Yeah. Germany. Welcome. Thank you. Howie. Javi from Australia. Australia. Welcome. And you? And Ashley from Australia. Welcome. Leah from France. And Zoe from France. And you? Marika? Hurricane. Harika. Haruka. Again, please. Haruka. 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 Yes. Haruka. From Japan. Haruka from Japan. Haruka. Thank you. Thank you, sir. Darren from Australia. I didn't think that was an Aussie name. Luke from South Africa. Welcome, welcome, Luke. And this is our first stop. In our stops, first I will give some information, and then I will give you some free time for taking photos, and I will be waiting for you if you have questions. This is our first stop, the panorama, and then today we will go to Selime Monastery, and then we will go to Ihlara. Ihlara is a valley 14 kilometers long, and we will walk 14 kilometers. It will take 5 hours. वेरी गुड। I am joking. We will walk only 3.5 kilometers, and then we will go to lunch in the valley next to the river. It will be very beautiful, and then we will go to the underground in the afternoon, and we will go to Uchisar for the Pigeon Valley. Now, please follow me. Let's do it. ये हमारी जो है ना गाड़ी का नंबर है, तो ड्राइवर बोल रहा है ये गाड़ी का नंबर याद रखो ताकि जो है ना किधर भी हो तो ये गाड़ी हमको पिक कर लेगी। तो ये सारे जो है ना ग्रुप मेंबर्स हैं। अरे नो प्रॉब्लम। तो अभी जो है ना हमारा जो है ना ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा स्टार्ट हो चुका है। First, the basics. In the east, there is a mountain. You can see the silhouette of the mountain. It's 60 kilometers from here. Its name is Argeus. It is 3,917 meters high. And when we go to Ihlara, we will see two more mountains, Hasan and Melen. They are also over 3,000 meters. And you see the red fairy chimneys over there on the hillside. That place is called Red Valley because there was a volcanic cone there. The volcanic ashes were hot when they landed, so they became red. And this is Pigeon Valley. Today, in our last stop, we will go to the other end of Pigeon Valley in Uchisar. We will see the other half, and there will be lots of pigeons, and we will be able to feed them there. Okay, around 60 million years ago, the volcanic ashes from the big mountains, Erciyes and Hasan, they started to erupt, and their volcanic ashes arrived here.
And this place was all a lake. And the ashes start to accumulate under the lake. From small volcanicals like the Red Valley and Acıgöl, lava and ashes also arrived, and they all accumulated under the water. And with the pressure of the water, it became hardened. And we have this top tufa layer. It's actually volcanic ash with some lava inside it. And we have it in some places 100 meters, in some places 150 meters of tufa under the ground. And around 10 million years ago, the lake started to vanish, and there were rivers. One river carved this valley, another river carved another valley, and the rivers carved these valleys, and later the rivers also vanished, they melted. And we have these tufa layers. We call them fairy chimneys, these triangle structures. They look triangle because there is erosion, and the soil and the soft volcanic ash, they just erode, and when the top part emerges, the top part is at least 30,000-40,000 years older than the bottom part. So the top part becomes thin. The bottom part is 30,000, 4,000 younger, so it is still white. And we call them chimneys, but fairy chimneys. We call them fairy chimneys because in the past, when people went to work early in the morning, there was a breeze, and from the cracks inside the chimneys, they heard strange voices, and they were scared. And they said, fairies are singing inside. They tried to justify it, make it logical. Fairies are singing inside, so let's call them fairy chimneys. We don't need to be scared anymore. So they start to call them fairy chimneys, and they start to carve them, make houses inside them, make pigeon houses. We will see lots of pigeon houses later. And we have this superstition, blue beads. This is evil eye. We believe that these protect us from the evil eyes of people. And when the lava reaches the region, this is the shiny black rock. This is obsidian. The hottest lava becomes obsidian, and it is very. It can become very sharp. And in the past, people used them as knives, spearheads, for arrowheads. They used them. And in Game of Thrones, dragon glass. You can kill the Night King with this one. You can kill it. You can find lots of it. And this is our first stop. It's 10:15. I will give you 10 minutes. You can use the bathrooms over there near the minibus. You can take photos, but don't go to the edges. They can become slippery and you may fall down. So don't go to the edges too much. Okay? 10 minutes free time. If you have questions, I will be around here. तो जी दोस्तों, आपने सुन लिया होगा इसका हिस्ट्री हमारे टूर गाइडर से, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही क्लियरली जो है ना एक्सप्लेन कर रहा है। तो अभी हमको 10 मिनट मिले हैं फ़ोटो के लिए और अपना घूमने के लिए। हमारे पास जस्ट 10 मिनट है, ठीक है। 10 मिनट के बाद जो है ना हम इधर से दूसरे पॉइंट में निकलेंगे। तो आप लोगों ने बाकी देख लिया, दूसरा मैं आप लोगों को जो है ना इधर का और भी व्यू करवाता हूँ, लेफ़्ट राइट और बैक साइड का। तो ये मैं अभी आपको जो है ना इसका वैली का जो है ना पूरा विजिट करवा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बोल रहा था कि ये जो है ना हवा, बारिश और ना इसके साथ इनकी शक्लें जो है ना चेंज होती रहती हैं। ये लावा फटने की वजह से कुछ जगह ऐसी हो गई हैं, ठीक है। इन लोगों को जो है ना परियों की ये गार भी बोलते हैं, क्योंकि पहले लोग इधर से जब गुज़रते थे तो वो बोलते थे कि इसके अंदर से जो है ना आवाज़ें आती हैं। तो बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया इसके अंदर से जो है ना जो परियां हैं वो जो है ना गुनगुना रही हैं। तो ये लोगों का जस्ट ख्याल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। Important in our region because it's the highest point, and there were always soldiers, military people at the top of it, and they would warn the people about the coming armies, and they used pigeons to send messages. Actually, there are 4 castles in the area. We call them castles, but they are more like watching posts, observation posts, because they are not strongholds like a proper castle.
Uçar. In Nevşehir city center there is a castle, a small one, Uçhisar Castle and Ortahisar Castle, and in Ürgüp, Ürgüp's old name was Başhisar, the main castle. These four castles can see each other from the top, and they used to send each other messages with pigeons at daytime, with a fire at nighttime. And they would make a fire at the top of it, and they would use some special signals to give news that enemy is coming. Our region, Cappadocia, has been inhabited by people since 8000 BC. In 8000, for nearly 10,000 years, people have been living here. And the first settlements were very interesting. They were adjacent houses. The houses were next to each other, so they didn't have doors, they didn't have windows, they didn't have streets. All the houses were connected to each other, and the only way to go there was climb from the stairs to the entrance of the town, and then they would walk on the roofs. The entrances to the houses were through roofs also. And they also buried their dead in their houses. In genuine position, in potteries, they buried their dead in their houses. And the first known civilizations in Cappadocia were Hattis and Luwians. They were Indo-European people. And later, with the arrival of writing, in 2400 BC, the Hittites came to Cappadocia. They came from the north. They were also Indo-European people. And they came here, and they changed the way of life here. First of all, every city, every town had a god. And if you conquer many cities and many towns, you had more gods. So Hittites were very successful. They had over 100 gods. And they had a god for sun, for rain, for wind, for everything they had a god. And the Hittites wrote on cuneiform small tablets. They had the cuneiform writing, and they wrote on clay tablets. They found tens of thousands of tablets in Kanish and in some of the places here in Cappadocia. They wrote about laws, religion, religious ceremonies, trade agreements, and the Hittite Empire was so vast that they were strong enough to fight the pharaohs of Egypt. And in history, the first written peace agreement was between the Egyptian pharaohs and the Hittites, Kadesh Peace Treaty. And it is the original form of the agreement. One copy of it is in the United States headquarters in New York. So they were important in the history of mankind. And they started to make potteries with the pottery wheel in Cappadocia. They start to carve the rock cut places and the Uçhisar Castle. Today in the afternoon we will see the underground city. They were the first people to carve the underground cities, and they started a way of life. For example, they used fire pits, and we still use the fire pits for cooking. So they have a lot of influence in the lifestyle of Cappadocia. And the Hittite Empire continued until 1200 BC. There were lots of attacks, Cimmerian attacks, Scythian attacks, and they collapsed in 1200 BC. But there were small Hittite kingdoms. And the Hittites, 4,000 years ago, they had prenuptial agreements, they banned torture, they banned lots of inhumane things, so they were civilized people. Even their kings had to answer for their acts in the court. So they had a kind of democracy. They had a small parliament called Pankush. At university, I read a clay tablet with my professor. It was a prenuptial agreement. A Hittite woman was getting married with an Assyrian tradesman. The duties of the husband, duties of the wife were written, and there was an interesting article. If the husband left for 2 years without any knowledge, any news, the marriage would be annulled. So, but in modern Turkey, we have the prenuptial agreements in the last 20-30 years. But we, in Anatolia, we had it 4,000 years ago. And in the 6th century BC,
Persians started to conquer Anatolia. You know the movie 300 Spartans? They conquered all of Anatolia and they tried to conquer Greece. But the case was different with Cappadocia. The Persians were worshipping fire at that time, and there were active volcanoes here. So they worshipped this area. They founded a holy place, Cappadocia. So they gave the name Cappadocia, the land of beautiful horses. Also, they call this place a land of beautiful horses because our elevation is 1,100, 1,200 in some places. Because the elevation is high, the lung capacity, the lungs of the horses are bigger than the normal ones in seaside places. So they can run faster, they can run for a longer period of time. So we had beautiful horses here, and they were actually very fast horses here. And after the Persians set up a kingdom here, and it was governed by a Persian, and this continued until 333, until Alexander the Great. Alexander the Great started from Macedonia, conquered all of Anatolia, Syria, Egypt, Persia, and some parts of India. And after he died, you know, he had a very short life. And after he died, one of his generals founded Cappadocia Kingdom. Cappadocia Kingdom had its own kings, and it was influential in the central Anatolia. And there were always lots of attacks in Anatolia. And in 17 AD, the Cappadocia Kingdom collapsed because the Roman Empire came here, and the Romans conquered all of Anatolia, and that was the beginning of also Christianity. And at the beginning of Christianity, it was forbidden because the Romans were pagan at that time, and whenever they found Christians, they persecuted them, sometimes tortured them, and tried to convert them. And the first Christians heard about the rock-cut places, secret valleys, and underground cities in Cappadocia. From the beginning of Christianity, lots of Christians started to come here, and they founded their churches, but secretly. And later, in the 321, Christianity was accepted in the Roman Empire, and the Roman Empire was later divided to West and East. We call the East Roman Empire Byzantine, and until the 11th century, Byzantine Empire reigned in Anatolia, but there were always Arabian attacks, Persian attacks, and people still needed the underground cities and rock-cut places, so Cappadocia was still safe. And in 1071, Seljuk Turks arrived Anatolia. They defeated the Byzantine army, and they started to conquer city by city all of Anatolia. They found the Seljuk Empire was a big empire, and they gave a lot of importance to road safety, and they built roads, bridges, and Turkish baths. So they constructed many places in Anatolia, and they built lots of caravanserais. Caravanserais are like highway motels, protected by the soldiers, and every 30 kilometers there was a caravanserai. And the distance is nearly 30 kilometers because on horseback or on camelback, if you start from one caravanserai, you can go to the next one in 3 days, until the sunset. So you leave one in the morning and reach another one in the evening. So in Anatolia, trade flourished, and people started to become wealthier. And with the Turks, Seljuks or Ottomans, we always let people speak their own language. We always let people believe their own religion. So there was language and religion freedom. So Turks and Muslims and Christians, they start to live here. Today our next stop is Selime Castle. Selime Castle used to be a church. We will see there's a basilica there and some churches and a chapel.
And it was when after the arrival of the Seljuk Turks, it was used. Some parts of it was used as a caravanserai. It was also used like a castle, and it was the administration center of all Ihlara Valley. Ihlara Valley is 14 kilometers long, and there are over 100 churches there. All those churches were connected, linked to the church in Selime, and they always obeyed the rules. That they raised monks in Selime, and they sent them to the churches in Ihlara. And Selime was captured by the Mongolians in the 13th century. There were many Mongolian attacks. Genghis Khan and his sons, grandsons, and the biggest attack was in 1283. They defeated the Seljuk army, and they captured the cities one by one. In Selime, Selime is very famous for defending itself against the Mongolians. Muslims, Christians, they all fought together against the Mongolians, but in the end they lost. And some parts of Selime was burned by the Mongolians. And the name Selime was given because Selime is a Turkish lady name. Monastery is a religious Christian place, and the two names came together because the wife of the Seljuk commander who fought against the Mongolians was for the place. She was killed while defending the place, so her name was given to the monastery, the place. It will take 45 minutes from here to Selime, and then we will visit Selime Monastery, and then we will go to the Ihlara Valley, and we will walk 3.5 kilometers, not 14, and then we will have lunch in Ihlara Valley, and then in the afternoon, after lunch, we will go to Kaymaklı underground stays, and we will go to Uçhisar. In Uçhisar, we will have 2 stops. We will go to an onyx workshop. Onyx is a rock mined here. It is mined from the earth here. It looks like marble, but it is transparent. Light can pass through it, and they make some decorative items from it. And we will go to Pigeon Valley in Uçhisar. And if you want, you can feed the pigeons there. There will be hundreds of them. In most of the European countries, pigeons are seen like a pest. They destroy the roofs, but in Anatolia, the case is different. We love pigeons, and we make lots of pigeon houses, and we feed them. Except for starvation, people never eat the pigeons. They are seen as the symbol of peace. For Christians, it was the symbol of the Holy Soul, dove, and pigeon. So pigeons are well respected here. And I have some fairy stories about pigeons and fairies, but Do you mean a pigeon or a dove? they are very similar. So most people say dove or Well, pigeon. in Australia, the dove is white. A pigeon is grey. No, we have all colors of Okay. pigeons here, but the doves here are mostly white or grey. Okay. And they're seen as peace, the dove. But the pigeon is seen as a menace. so you love both of them. Okay. Right. Okay, get some rest, and it will take 40-45 minutes to Selime, and I will wake you up there. Do you have any questions? What is the name of this place? Selime Monastery. Selina Monastery. This is our guide. Very nice and very good guide. Thank you very much, sir. I'm going to take you from I needed the short. अभी जो है ये थोड़े हाइट है, तो हम सबको जो है ना इधर पैदल ही ऊपर जाना है। वो ऊपर एक व्यू पॉइंट है, उधर हम सब जा रहे हैं।
is the winery, but sorry, it's too early to serve wine. They use this place as a winery. They will put all the grapes here and they will craft them. And the juice will flow from here and they put big jugs here. And they make wine or vinegar, or they use these fire pits here to boil the grape juice. When you boil it and add some materials inside, you have grape molasses. Grape molasses is just like maple syrup or jam, but it contains lots of iron inside it. And in Cappadocia we have terrestrial climate. It is 30-40 degrees in the summer and very dry. In the अभी हम जो है और ऊपर जा रहे हैं, सांस चढ़ गए इतने सही। Camels used to go through here, and this place was used as a caravanserai. This is the caravan route. Please follow me. What can this place be? What can it be used for? Toilets. Sorry? Toilets. No, they are fire pits, not toilets. Okay, in the past, when people needed housing, it was very simple. You know, the tufa layer, the tufa is a few centimeters very hard to carve. But after you dig a few centimeters, it becomes very soft. And you can give any shape you want. And after that, with the contact with air, it becomes hard again. And we can see oxide, mineral oxides on the sides of it, so it becomes harder. So in the past, let's say you are just having one room, you live in a one-bedroom house, and you get married. And your wife says, let's get a bigger house, let's get a mortgage. There was no problem like this. You take a pickaxe and carve another room. Whatever you need. You have children, you need one more room, you carve it. Whatever you need, you just carve it. This is the stable of the caravanserai. And they needed places to put water for the animal. They just carved this. They needed places to heat the animals, so they carved fire pits. They needed places for putting some hay or some fodder for the animals. They carved it. They needed a place to tie the animals with a rope. They just carved it. Whatever they needed, they just carved it. Life was very simple. No mortgage, nothing. Life was very simple. Can stay here. तो अभी हमारी जो एक लास्ट कैप्चर प्लेस है उधर जा रहे हैं। They have well here. But like for storing the snow and rainwater, and they used it later. So do they live in here themselves in their families as well as the animals? बता रहा है कि ये उन्होंने होल किया हुआ है, उधर ये स्टोरेज करने के लिए स्नो या वाटर वगैरह जो है ना वो इधर स्नो को स्टोर कर लेते थे।
please watch your head. We will continue this way. Watch your head, please. Watch your head, please. Wipe your head. Is it great? Yes, we will go up from here. Then we first. Okay. ये सुरंगें बनी हुई हैं fellas. लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही जबरदस्त। You stay, stay. I just safe. ये अभी हम जा रहे हैं किचन में, ये सामने किचन है। You can see the post boxes over there. You can see the post boxes. What? Look at the post boxes. Post box. They use them for sending messages. ये बोल रहा है पोस्ट ऑफिस है जो पिजन के जरिए जाते थे, कबूतरों के जरिए जो मैसेज भेजते थे, ये उनके जो है बॉक्स बने हुए हैं। कबूतर इधर ही आके जो थे मैसेज देते थे, जो लिख के आता था या कैसे भी। So let's go to the kitchen. Very nice. In Seyret, there are 3 churches and this chapel. In Seyret, we see a portion because there are more churches and there are administration buildings. There is a school, and it was used as a caravanserai, as a school, as a monastery. So there were lots of people in Seyret, and they cooked for all of them here in this kitchen. This kitchen is unique for its pyramid chimney. This is unique in Cappadocia, and they have fire pits and also fireplaces to cook for hundreds of people here. And these poles up there, they were used for putting the oil lamps. For the oil lamps, they use linseed. Linseed is something similar to sesame. They crush the sesame and they take the oil from it and they use them in lamps for lighting. And this pyramid chimney is unique in all Cappadocia. And it's really very difficult to imagine how they built it. So where did they light the fires? They made the fire in the fire pit. तो ये जो है ना बता रहे थे ये किचन है, ठीक है। ये ऊपर सामने चिमनी बनाई हुई है उन्होंने, आप देख सकते हैं। ये किचन है, लेकिन ये बता रहा था कि ये किचन जो है ना, ये असल में नीचे जो है ना एक बाज़ार होता था पहले। तो बाज़ार में जो लोग ख़रीदो फरोख्त करने के लिए आते थे, तो उनके खाने पीने के लिए जो है किचन में खाना ज़्यादा पकता था जिस दिन बाज़ार ओपन होता था। तो उस दिन ये तकरीबन हज़ारों लोगों के लिए जो खाना है इस किचन में बनता था। तो इसलिए ये इन्होंने किचन इधर बनाया हुआ था किचन। तो अभी ये किचन से बाहर देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। बहुत ही No, it's not. I need to have you guys need to have options. व्यू है। Do you guys want a photo? Are you sure? Do you want a photo? Come on. Of course you are. Oh, you can't use my own lines against me. Yes, we can. Be candid. This is for Instagram. There's another That cannot be candid. Just be careful. That's good. That's a cool photo.
ये उस वक़्त का मिनिस्ट्री हाउस है। And after we visit the third one, I will ask you, did you like the first, second, or the third one? I will ask you. ये चर्च है। Guess better. Yeah, please stop. Oh, wow. Wow, wow, wow. This is the basilica. This is the basilica. With the very soft to follow you, it must be very difficult to carve these columns. One round, one square, one round again. And you can see the frescoes, some of them are still visible, you can see them. And just like in World Museum, you know, outside the Opry Museum there is a church, Barton Church. Barton Church has got a bell walls ceiling like this one, and it has got all the story of all the stories in the Bible. अभी इधर से जो है ना थर्ड वन जो चर्च है गाइडेड बोल रहा है, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है और बहुत ही खूबसूरत चर्च है। चलो अभी हम जो है ना उधर ही जा रहे हैं, वो देखते हैं कैसा है। तो ये हम जो है तीसरे चर्च की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इधर देखी जाए तो बहुत ही बड़ी कारीगरी है। ठीक है, हाथ का हुनर, क्या बात है। उस वक़्त कैसे ये इन्होंने इसको तराशा, और ये बहुत ही मेहनत का काम है यार। मैं देख रहा हूँ और देखने के बाद सोच रहा हूँ कि ये कितनी इन लोगों ने मेहनत की होगी उस वक़्त। ये है थर्ड चर्च। You know the story about Saint Peter and Jesus. Saint Peter said, I will never disown you, I will always protect. And Jesus said, you will betray me 3 times before the roosters crow at dawn. And the soldiers came, the Roman soldiers came to arrest Jesus and asked him, are you his follower? And he said, no, I'm not. He disowned once. He followed the soldiers and they caught him again at night. He disowned, betrayed again. And near dawn, the soldiers caught him again and he disowned Jesus again. And after that, the roosters started to crow. So they give the symbolic message. Be honest, be truthful, try to keep your promises. They also use the symbolism here. Look at the key. There's a cross painted on the key. The key to heaven, the key to happiness is through the church, through Christianity. There was also the same key on this side, but half of it is broken. And there is an Instagram spot here. It's beautiful Instagram spot. People always take photos here. And it's very beautiful, wonderful background. If you want, I can take your pictures here. ये है जी पिजन मैसेज। You don't need the legs, just get the इधर जो है ना कबूतर लेके आते थे और इनके अंदर रख देते थे जो If मैसेज you put वगैरह। some hot air balloons in the background with Photoshop, it will look wonderful. Very good, thank you. तो हमने अभी हम जो है ना इल्हारा वैली पहुंच चुके हैं। तो अभी हम जो है ना अपनी गाड़ी से जो है नीचे उतरे हैं। नीचे उतर के गाइड बोला इधर आओ हमारे साथ, हमारे पीछे पीछे मुझे फॉलो करो। तभी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वैली यहाँ ऊपर से देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत स्वीट है, बहुत मज़ेदार है। तो ये वैली का व्यू है, ब्यूटीफुल। No, I'm not joking.
No, I'm Serbian. Ah, okay. Yeah, and sometimes I have to hurt people. But after that, they matter. तो अभी हमारा जो लारा वैली का टूर है वो तकरीबन ये जो है ना रिवर ये तकरीबन 14 किलोमीटर है, लेकिन जो हम इसकी पैदल चलने वाले हैं वो है तकरीबन 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर जो है ना हम बाय वॉक जो है सफ़र करेंगे। ये जो है ना बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सिर्फ इसके लिए जो है ना ये मैंने टूर जो था ना बुक किया था। तो ये है इसकी एंट्री, यहाँ से एंट्री हो रही है। इन्होंने इसकी आई थिंक एंट्री फीस है, लेकिन ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। बहुत डीप है, हम इस वक्त बहुत हाइट में खड़े हैं। We are now here in basics. We are here now in Ihlara. The beginning was there, and we are here now. And Selim is here. He came from Selim. We are going to walk down the stairs, 400 steps, and we will not come back here. Okay, we won't come back here. We will walk down the stairs. There is a church at the bottom of the stairs. We will visit the church, and then we will start our walk through this way, that way, and we will walk to the tea garden, and then we will walk to Belisırma. If anything happens in Belisırma, we will go to Belisırma restaurant. All the place and restaurant are the same. If anything happens, it's usually very crowded, so please keep close to the group, and we won't leave something like that. But if anything happens, we will go to Belisırma restaurant. We will walk 3.5 kilometers, and there used to be 10,000 carved rooms inside the valley. You can see some of them. In the 1950s, there was an earthquake, and the houses, especially at the bottom, they collapsed. So the government forbade living inside the valley. There used to be 10,000 rock-cut houses, rooms. There used to be, there are over 140 churches. 17 of them are visitable, and we will visit only one of them. And as I told you, we have a microclimate, Mediterranean climate. We have pistachio. Oh, nice. If you come in October, you can eat them. At the end of September or beginning of October, you can have the pistachios. There were lots of them at the here, but people ate. But they are not ripe yet. You have to wait 15 or 20 days more. So we will climb 400 meters and not coming up here again. There are two paths. If you have problems with your knees, this one is better, a bit longer. Oh, okay. They will meet in the middle, so no problem. This one is a bit higher but shorter. Choose your own path, and you will वो बता रहा है कि अगर किसी के जॉइंट में पेन है तो वो दूसरा रास्ता यूज़ कर सकता है स्टेप के बिना, और अगर ठीक है तो ये रास्ता बेटर है। इसकी वजह से ये है कि इसमें स्टेप हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है। तो हम जाने वाले हैं नीचे, मैं बहुत हाइट पे, तो मज़ा आएगा।
तो मैंने जो चॉइस किया है वो शॉर्टकट किया है, मैं शॉर्टकट वे से जाऊँगा। अभी जो है हम नीचे उतर रहे हैं इल्हारा वैली में जाने के लिए। वो बहुत ऊंचे थे, तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा किया काम, ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं नीचे उतरने के लिए। Okay, this is one of the churches here, and in Ihlara the churches are more freestyle than Cappadocia. In Cappadocia, in the center, they are all from the New Testament, and they have very few flower designs or geometrical designs that we see here. Mother Mary, Virgin Mary, is one of the most hot topics, the hottest topics here. So we see. अभी हम इधर से जो है ना जा रहे हैं, कह रहा है कि 500 किलोमीटर के बाद जो है ना एक टी ब्रेक लेंगे हम, तो 500 किलोमीटर के बाद देखते हैं टी ब्रेक के लिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वंडरफुल ब्लैकबेरीज एंड रेड बेरी। पैदल हम जो है ना तकरीबन चलने वाले हैं 3.5 किलोमीटर। ये 14 किलोमीटर लंबी है, लेकिन जो है ना वो बोल रहा है कि नहीं, हम जो पैदल सफ़र करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ मेंबर जो हैं वो ज़्यादा एज के हैं, तो 3.5 ही इनफ है, क्योंकि उसके बाद जो है नेक्स्ट प्लान भी है। बहुत सारे विजिटर हैं इधर। जंगल में आ गए हम। नो प्रॉब्लम, ये 500 मोर है, 500 किलोमीटर मोर, नो प्रॉब्लम। पूरा भैया जंगल है। Give or take a big one. Under the rock, under the rock, and reach. It's like one of His teeth are more just stops here in Turkey, or you were like visiting different countries? Or? Yeah, we've been. And then it can't get off, I see. It's fish and Yes, Slovenia. there's some being suitor and parachuted. Yeah.
तो वहाँ से जब हम निकले 500 नहीं 700 मीटर के फासले पे ये एक टी पॉइंट है। 1 now. We will have lunch in our next stop. Do you want 10 minutes or 15 minutes here? Okay, 15 minutes. तो हमको 15 मिनट मिल गए हैं इधर फ्री राइड के लिए। 15 minutes. हम फ्री घूम सकते हैं 15 मिनट। फिर 15 मिनट के बाद जो है फिर हम जो है इधर से निकलेंगे। ये जो है ना ग्रीन वैली में, जिसका नाम इल्हारा वैली है, ये हम भी जिधर से उतरे हैं थे नीचे, वहाँ से तकरीबन 700 to 800 मीटर के फासले पे ये एक रेस्ट पॉइंट है। तो लोग इधर जो है ना रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन 700 किलोमीटर के बाद, सॉरी 700 मीटर के बाद, किलोमीटर कह रहा हूँ, 700 मीटर के बाद थक जाते हैं। ये मामूली सी बात है। शायद रास्ता ऊपर नीचे इस वजह से 15 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो गया। तो अभी हम जो है निकल चुके हैं यहाँ से। तकरीबन 500 मीटर के बाद जो है ना हमारी लंच ब्रेक होगी। यार ये रास्ते तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं कभी कभी देखा करता था, सोचता था कभी हम भी जाएंगे। यार बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा, व्यू बहुत ज़बरदस्त है, अमेजिंग। अभी तकरीबन 500 किलोमीटर के बाद जो है ना, या सॉरी फिर मैं 500 किलोमीटर कह देता हूँ, 500 मीटर के बाद हमारी फिर ब्रेक है, लंच ब्रेक है। यार ये जो नदी के साथ साथ है ना, मैं क्या बताऊँ क्या नज़ारा है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। ठीक है, जब मैंने ये ट्रिप बुक नहीं किया था तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये इतना अमेजिंग होने वाला है। तो जस्ट मैंने उनकी जो है ना डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, तो पढ़ने के बाद जो है ना मैंने फील किया लगता बहुत ही अमेजिंग होगा। लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना उससे बढ़ के है। तो आप जब भी आओ, मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप ये जो है ना ग्रीन वैली का जो टूर है वो बुक कर लिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप सोचते हैं कि आप आओगे सोलो और अकेले निकल जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि आप ये टूरिस्ट गाइड के दिए ही ले लें, क्योंकि ये उर्गुब से तकरीबन इधर 45 मिनट की ड्राइव के बाद ये जो है ना वैली है। ग्रोमे से तकरीबन 50 मिनट का वे होगा। ठीक है, नेफशेयर से तकरीबन ये 40 मिनट का डिस्टेंस है। तो इसलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप टूरिस्ट गाइड ले लें, उससे आप विज़िट करें, तो आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो आपको जो है देखने को मिल सकती हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप सोलो आओगे और अकेले जाओगे और बचत करोगे, तो मैं सोचता हूँ कि उससे आपका टूर ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप वो चीज़ें नहीं देखोगे जो आपको देखनी चाहिए। इस वजह से आप बुक कर लें।
तो जो है ना टूरिस्ट कंपनी जो है उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे आप उसका नेम देख सकते हैं। More people. You get more people. Yeah. That's a really funny guy. I want to use. Like comparison. A lot here. Nobody said it was like a bad idea. They said everybody said it's expensive, but they don't have it. Right. I asked people as well. Like, and then also I got asked of locals. तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद लंच ब्रेक है। देख सकते हैं यार, ये बिल्कुल जंगल है यार, क्या बताऊं। पाकिस्तान से है? हाँ, पाकिस्तान। कहाँ से? मैंने सोचा ये पॉइंट देख के शायद हम पहुंच गए, लेकिन नहीं, इधर से भी और आगे है, साथ में है तकरीबन 100 मीटर के फासले पे। ये पूरा ग्रुप है मुख्तलिफ एजेंसी से। बहुत ही ब्यूटीफुल है। There's a lot of like, you know, communities, vegetation, live in Sydney. So they open up a lot of this whole street. It's literally called the literally, yeah. जी बिल्कुल, ये हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में। इधर से हम जो है लंच करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। रेस्टोरेंट का नेम देख लें। Our table here. Under the ground. And we are going to the next one, Kaymaklı. In Kaymaklı, it has got 8 floors. Of course, in this one, 6 floors are visitable. In Kaymaklı, 4 floors are visitable. But I usually don't prefer this underground because there is a tunnel between the 3rd and the 5th level for 120 meters. But it is a one-way go. So if there are groups waiting to go up or down, you have to wait a lot of time in a small place. So I usually don't prefer that one. Kaymaklı Underground City has got 8 floors under the ground. And let me tell you about how people started to make these underground cities. You know, as I told you, we are here in the center of Anatolia, and we are between Europe and Asia. And there were always enemy attacks, and there were always enemy armies. Just imagine an army of 20,000 people. 20,000 people will need breakfast, lunch, dinner, but they have to move fast and they can't carry enough food. So they were always raiding these villages. And we have terrestrial climate, so in the summertime you harvest all your food
And if you lose it to the enemy army, then you will starve to death in the winter time, because in the winter it is very cold, lots of snow, and you can't find any food outside. So the struggle was this save your food, animals, and your children from the enemy armies. In Kaymaklı, in Derikuyu, there are no valleys, there are no fairy chimneys, but the same tufa layer is under the ground. In some places 100 meters, in some places 150 meters. So beginning with the Hittites, we know that it was the Hittites who first carved the underground cities, because they found some clay tablets, some cylindrical seals and lion statues from the Hittites. So we can say that the underground cities are at least 4,000 years old. There are some experts who claim that they are much older, but there is no proof, evidence. And the Hittites, during the Hittite times, first people made a secret basement under their house to hide their animals and food, but it wasn't enough, so they made tunnels between the basements. It wasn't enough, so they made one more level under the ground, and then one more level, and the underground cities changed a lot with the beginning of Christianity. The first Christians heard about the underground cities, and they were running away from Roman soldiers, so they came to Cappadocia, and they made the underground cities deeper. So they dig more levels under the underground cities. And you know, from the movies, the Roman soldiers had very big shields, and they used their formation in the wars. But in the underground cities, the tunnels are narrow, and only one person can go, and they can't use their shields because the tunnels are narrow. And the Roman soldiers had very long spears, but the tunnels are winding; they are not straight, so they cannot use the spears. And also Christians made more improvisations. For example, in the tunnels they made some trap holes, and they put some sharp objects at the bottom of it. During a Roman invasion, military invasion, the soldiers would fall into the holes and die. Now they are covered with glass. You will see many holes like this covered with glass in Kaymaklı underground state. And also they made attack holes. For example, you are going through the tunnel, there is a hole, and a sword suddenly appears from the side, or a spear appears from the top, and they attack you and kill you. And one last improvisation was, they made very large sliding doors, as big as the inside of this minibus. Some of them are 300 kilos, 400 kilos, the biggest ones are 500 kilos. They are round sliding doors. I will show you the mechanism there. They can only be opened from the inside. From the outside of the tunnel, impossible to open. And there is a hole in the middle of the sliding doors. If the enemy finds the sliding door and if they try to break it, because they can't open it, they try to break it, but from the hole, they use arrows or spears and kill the enemy. So underground cities became very difficult to conquer. And there are not only two underground cities in the area. We have got Kaymaklı underground city, very big, Derikuyu underground city, very big, but there are in the city of Nevşehir 64 underground cities. Some of them are like underground villages, 2 or 3 floors, for 400, 500 people. Some of the underground cities are very big like this. And in Nevşehir city, 64 underground cities. The surrounding cities, Kayseri, Kırşehir, Niğde, we have got over 200 underground cities. And the distance between Derikuyu and Kaymaklı is 8 kilometers. And there was a tunnel connecting these two underground cities. They will send each other help, or during the enemy attack, if they are going to lose, they will escape to the next one. And it's not proved by the evidence, but some experts say all the underground cities were connected to each other at one time under the ground. So you could enter Cappadocia from one side and go to the other side only by the underground cities and tunnels.
but all the tunnels haven't been found yet. And in the underground cities, there are churches, there are wineries. Even during the peace times, they use the wineries to make wine and to store the wine. Because in the rock-cut places, the temperature in the tufa layer, in the rock-cut places, temperature is always between 15 and 20. Summer and winter. When it is very hot like this, the underground feels like they have got air conditioning. In the winter time, when it is minus 20 outside, it is still 15 to 20 degrees there. So if you make a small fire, you can live there. But people didn't live in the underground. They just stayed there during the enemy attacks. They normally used the wineries, they used as storage places for their food, and during the enemy attacks they stayed there. A few weeks, at most 1 month, something like that. They didn't stay all the time in the underground cities. They had ventilation shafts for getting fresh air. The ventilation shafts are 60 meters deep and they are connected to every level, so you can get fresh air every level of the underground city. And also in the underground cities there are some water wells at the bottom of ventilation shafts in some places. They also had separate ventilation shafts, water wells, because if the enemy finds the ventilation shaft, they can poison the water. So they had separate water wells. And in the underground cities, they had rooms for families. Every family had one room, and they could design it as they liked. They had stables, storage houses, ventilation shafts, church, temporary graveyards. I will show you. They had kitchens, but they used the kitchens very rarely during the enemy attacks because the enemy can see the smoke. So they cook once in a week or twice a week, and after midnight. And you will see there will be footsteps carved into the ventilation shafts. Because during the enemy attacks, they close all the sliding doors, but they wonder what the enemy is doing. So they send some athletic young people by using the footsteps, and they climb up and they spy on the enemy, or if possible they sabotage the enemy. So in Kaymaklı Underground City, nearly 10 to 15,000 people could take refuge there. They could take shelter there. The capacity is very big, and all there was not an entrance building that we are going to see. 5 or 6 houses had a tunnel, connected tunnel, and they could go to the underground city. So there was no entrance building like one we are going to see. And during the enemy attacks, the houses, the enemy would come and see all the houses are empty, and they would say, "Is there plague in here?" There's a sliding door here on the left side, a small one here. There's a sliding door here. A small one. You will see many in the underground. Okay, please follow me. You will not need. तो ये टनल है अंदर जाने के लिए। इधर से अंदर जाने के लिए जो है ना रास्ता है, इन्होंने अभी मेरे ख्याल से बंद किया। ये डोर है। I think, like, officially, I think like Indian spices are like the most spicy. Really? Yeah. Yeah. I just can't. I can't do it. The love is so. In Africa, there was like a groundnut soup. Yeah. It was like very nice. They will start. तो रेस्टोरेंट में पहुंच गए हम, तो सारा ग्रुप बैठ गया टेबल में। अभी हम इधर से एंजॉय करने वाले हैं अपना लंच। तो जी दोस्त, लंच हमारा हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त, और जो है ना बहुत ही मज़े का था। उन्होंने ऑप्शन दी थी कि आप चिकन लेना है, फ़िश लेनी है, मीट लेना है।
तो मैंने मिस चॉइस की थी फ़िश मैंने चॉइस की थी। फ़िश थी, ट्राउट फ़िश थी, इन्होंने स्टीम की हुई थी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। मैंने समझा शायद पाकिस्तान में जैसे फ़िश होती है ट्राउट और वैसे बनाएंगे, वैसी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसी भी थी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। तो स्पाइसी नहीं थी क्योंकि ये स्पाइसी लाइक नहीं करते इस वजह से, लेकिन उन्होंने जो है ना रेड चिली पास में रखी हुई थी, साथ में खुबस था, साथ में सैलड था, साथ में सूप था, सूप भी बहुत मज़ेदार था, ड्रिंक्स थी, वाटर था। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना लंच था। ये लंच जो था ये हमारी टूरिस्ट कंपनी की तरफ से था। मोस्टली जो भी टूरिस्ट कंपनी है जो 1 डे का जो आपको फुल डे का पैकेज देती हैं वो लंच उसी में इंक्लूडेड होता है। तो अभी देखते हैं इधर से आगे किधर चलते हैं। जी अभी हम आ गए हैं अंडरग्राउंड विलेज में। ये अंडरग्राउंड विलेज है। ये जो विलेज है तकरीबन ये 8 से 9 फ्लोर का है। ये विलेज ये लोग इसलिए बनाया था कि जब अटैक होता था दुश्मनों का तो लोग उसके अंदर चले जाते थे, और ये उन्होंने बहुत हिफाजती तदाबीर के साथ जो है ना इसको डिज़ाइन किया था। वो देखते थे दुश्मन कैसा है और उनके पास टूल कैसे हैं, ठीक है, हथियार कैसे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया था। किसी के पास लंबा तीर होते थे, किसी के पास शील्ड कवर होती थी बड़ी बड़ी, तो उन्होंने जो है ना छोटे छोटे रास्तों से बनाया ताकि जो है ना वो अंदर ना आ सकें उन शील्डों के साथ। और जगह जगह में उन्होंने बैंड दिए ताकि जो है जिनके पास लॉन्ग वो जो तीर होते हैं वो अंदर जा ना सके क्योंकि बैंड होने की वजह से। तो लेट्स सी, हम चलते हैं अंदर और देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। This is the sliding doors mechanism, sir. It can only be opened from the inside by rolling like this. From the tunnel, it's impossible to open. The mechanism of the sliding doors can only open by rolling from the inside. From there, impossible to open. It's another storage room, and you will see. Which one floor? This one? This is the 4th floor now. 4th floor now. This is the 4th floor. The winery was in the 3rd floor, and there is a ventilation shaft just elbow ahead. It is 60 meters deep. 60 meter. And there used to be a water at the bottom of it. You see, we are in the 4th floor under the ground, and we still get some fresh air. Yeah. You don't feel claustrophobic. It's not stuffy here. We get the fresh air. Because of the ventilation shaft, we are just going to see a little later. So this is family room. Another family room here. Okay. So this is also family room. तो ये किचन है। Yes, this is the kitchen. This is the largest boulder. This is door. Yes, this is the sliding door. This is the largest. Sliding. This one is about 500 kilograms. And they make flour. Yep. By sliding it. This is a storage room, so they brought flour here, and they brought wheat, and they made flour with this one.
ये जो सबसे लंबी टनल है, अभी हम उसमें चलेंगे। 60 मीटर है लंबी, और एयर इसके अंदर ऐसे फील हो रही जैसे एसी लगा हुआ है। Get some fresh air up and through, especially look down. So air coming, fresh air from here. Oof, very deep. Nice, great. And these are the footsteps to climb up and down. Okay, sir. There's another winery on the other end. Look up and down, get some fresh air. Moving on. Up and down, get some fresh air. ये एरो का मार्क दिया हुआ है, ये हमको गाइड कर रहा है किस तरफ जाना है। Please wait here. Please wait in this room. Please wait here. तो अभी हमने जो विज़िट किया है वो है अंडरग्राउंड सिटी का। ये अंडरग्राउंड सिटी जो है वो 16 फ्लोर के ऊपर बनी है। ये 16 जो फ्लोर है ये 60 मीटर डीप तक है। अब से ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना, वो ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक जो है वो 60 मीटर डीप है। और ये 60 मीटर डीप में जो है 16 फ्लोर बनाए हैं, 16 फ्लोर। तो ये एक फुल सिटी है, ये अंडरग्राउंड फुल सिटी है, और सिटी बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है। अच्छा, एक और जो बात है ना, उस ज़माने में अच्छा देखने में तो ये लगता है कि यार ये सिटी बनाई, लेकिन अक्ल हैरान रह जाती है देख के कि यार उस वक़्त इतने छोटे रास्ते, वहाँ से मटेरियल निकाला कैसे बाहर, ठीक है, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, फिर जो है ना उनका जो निज़ाम कैसे चलता था, वाशरूम अंदर, टॉयलेट, वो एक ख़ास किस्म का तरीका जो है पुराना वो यूज़ करते थे उसको वेस्ट करने के लिए। और जो सबसे मज़े की बात है ना, ये जो है ना अंदर तब भी ये जो था ना थोड़ा फ़र्क लोगों में होता था कि ये थोड़े रिच पीपल है, उनके लिए थोड़ा ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में उनके घर होते थे, जो थोड़े पुअर थे उनके नीचे घर होते थे, जो सबसे पुअर थे वो सबसे ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, ठीक है। और अंदर जो है लाइट वगैरह जो है वो बिल्कुल जो है ना समझ लें वो ऑयल वाली जो लाइट होती है वो यूज़ करते थे। स्टोरेज रूम बनाए हुए हैं, हर फ्लोर में स्टोरेज रूम है, ठीक है। आटा बनाने के लिए वो चक्की जो होती है वो भी है, ठीक है। अंदर पानी का निज़ाम है। फिर सबसे जो मज़े की बात है जो देखने में मुझे जो है ना बहुत ही अच्छी लगी, वो ये है कि हम नीचे डीप तक गए हैं, लेकिन अंदर जैसे ही अंदर जाते जा रहे हैं, अंदर जो है ना कोल्ड होता जा रहा है, ठीक है। हीट की बजाय कोल्ड होता जा रहा है। मैं सोच रहा था अंदर जाने से सांस बंद होगा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। उन्हें वेंटिलेशन सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है, एक सेंटर में ऊपर से लेकर नीचे एक सेंटर में उन्होंने एक सीधी एक ना होल ओपन किया हुआ, वहाँ से उन्होंने विंडो दी हुई है, तो एयर वहाँ से पास होती है। एयर पास होने की वजह से ये है, अगर ऊपर का टेम्परेचर हाई भी हो लेकिन अंदर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही रहता है। अगर ऊपर टेम्परेचर 40-45 डिग्री है तो अंदर का जो टेम्परेचर रहेगा वो 14-15 डिग्री ही रहेगा। अभी भी हम नीचे गए हैं तो टेम्परेचर तकरीबन 14-15 डिग्री ही था। तो देख के ये लगता है कि यार उस दौर में भी लोग जो है बहुत ज़हीन थे, बहुत माइंड रखने वाले थे। अगर आप आके देखें तो अक्ल दन रह जाती है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, और कैसे डिज़ाइन किए हुए हैं, रूम बनाए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है, ठीक है। तो जो है ना मैं आपको जो है ना नेक्स्ट आपको मैं दिखाता भी हूँ, उनके किचन दिखाता हूँ, रूम्स दिखाता हूँ, ठीक है, और फ्लोर बाय फ्लोर भी आपको दिखाता हूँ। तो जी बिल्कुल हम अपनी लंच वाली प्लेस पे पहुँच चुके हैं। इधर से जो है ना हम लंच लेंगे अपना।
Going to Ihlara Valley to Cappadocia Gore में for underground city. We will visit only 4 of them, and the part that we are going to visit is only 2% of the underground stair. The 2% will take us half an hour. You will see only 2%. It will take half an hour. Okay, please follow me. Imagine they've lost down there. ये इसकी एंट्री फीस भी है इधर अंदर जाने के लिए। So a stable in Seria today. It's very similar. They made places to side animals, put water, food for the animals. And we will follow the red arrows to go down, and we will follow the blue arrows to go up. And in the second floor there is a church. In the church, Make sure we're all here when you come out, Ahmed, alright? sorry? Make sure you count us all when we come out. I can send you up from the No, Ahmed, make church. sure we don't get lost. Sir, it's a trap hole. Shit, there's a Trap hole. hole. No, they are now closed with glass. Okay, There is a sliding door here. okay, big one. Do you know where you're going? You absolutely know we're not going to get lost in here. तो आप देख सकते हो कि ये उन्होंने सिर्फ एक आदमी के गुजरने के लिए रास्ता दिया हुआ है। Since I was a little child. Okay, I'm trusting you that we don't get lost. मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे फ्लोर दिखाने की। It's a storage room. It's nice and cool, isn't it? Always between 15 and 20. Nice, I like it. After carving the rock, you leave it rough like this. So that moisture can seep through it, can flow through it. If you make it smooth, it will collapse easily. And another principle is if you make one room here, you don't make another right under it. You make one here, one here, one here, you leave some blank in between the rooms. There's fresh air all the time because of the ventilation shafts. Don't get lost, that's my only concern. You could go for days though, couldn't you? Another trap hole now covered with glass. Now this one church. Okay. This is church. They're writing here. You feel fine? Yeah. Are you feeling fine? Yeah. It's so cool in here. I'd stay down here. Okay, so it's better than the car, I reckon. ये भी हम सेकंड फ्लोर में आ गए हैं। This is the church. Are you feeling fine? ये अंडरग्राउंड जो है ना विलेज है। I'm glad to hear that. Because after here, I will not be able to send you up. You have to complete Well, I'll be blessed. For baptism, they use here. As you can see, the blackness here, they light the candles and put them here. And in the next room is a temporary graveyard. During the enemy attacks, some people die and they bury them there temporarily. After the war is over, after the invasion is finished, they take the bodies to normal graveyards. Attack hole at the later.
अभी हम जो है इस टनल से अंदर जाने वाले हैं। देखें बहुत मुश्किल से जो है ना गुजरने का रास्ता है। तो मैं आपको ये भी कोशिश करता हूँ दिखाने की। ओके, वंडरफुल। They cut the grapes, they harvest grapes, they put them down and all of us staying here. And they start to crush the grapes and grape juice flows to here. And when they have the grape juice, they can make vinegar or wine. And the temperature is ideal for fermenting and storing wine. So they kept the wine here too. Even in the peace times, they use the wineries because it's a very healthy cellar. You don't need to build a special one. This one was enough for them. And also they could, as I told in Selime, they could make grape molasses, pekmez in Turkish, for keeping hot in the winter time. And when I was a kid, as I told you, we used to come here, and this was the sliding door. Now it is fixed with cement. It is fixed here. But it wasn't fixed when I was a kid. Come closer, please. And one boy here, one boy on the other side. We used to push it to each other, and we used to play with this one. This one was our favorite. We used to come here for playing hide and seek, and we used to push this. But nowadays it's impossible. From my friend's grandmother's house, the tunnel was blocked. They put iron bars. अभी जो हम 5th फ्लोर पे आ चुके हैं। Hello. How is it going there? It's fine here. It's cold. They had communication halls. The rent is high. The rent is really high. Can you sing a song for us, Andy? Okay, let me think. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. A loud clap for him. Thank you. Cappadocia. Thank you, Andy. Please come. ये भी हम पहुंच गए हैं पिजन विलेज। ये पिजन विलेज है, जो सामने इनके घर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये पोस्ट ऑफिस की तरह शेप है इनकी। ये लोग जो है ना इनको स्पेशल स्पेशल किस्म के इनके घर बना के रखे हुए हैं। यहाँ के लोग जो हैं इनको बहुत ही अहमियत देते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जो पहले दौर में क्या होता था, ये कबूतर हम यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने के लिए। तो मैसेज भेजने का तरीका ये होता था कि जिस जगह पे मैसेज भेजना होता था, फीमेल जो है वो अपने पास रख लेते थे और मेल को पाँव में बांध के मैसेज भेज देते थे। तो मेल जो है वो दूसरी जगह में जाके बैठ जाता था, वो मैसेज रिसीव करते थे और वापस मेल आ जाता था। अगर इसकी फ़ीमेल आपसे जो है वो आपने छोड़ दी या उसको वो गुम गई है, तो वो मेल कभी भी वापस नहीं आता था। उनके पास ये ट्रिक था कि फ़ीमेल को अपने पास रख लेते थे और मेल को जो है भेज देते थे। तो यही पिजन वैली है, ठीक है। इनको फीड करने के लिए ये गिलास 10 लीरा का है।